Hi, welcome back to the TI lectures. In this video lecture, we will be discussing about the black fungus. As we know that after the coronavirus, India got struck by another dreadful disease that's known as black fungus or mucormycosis, right? I have divided this black fungus portion into different sections. We will discuss each section in detail one by one. First, we will see what is black fungus, right? Black fungus or mucormycosis is a complication caused by a group of molds called mucormycetes, which may be present in the air and causes infection to the ill patients. Remember this is very important here to mention that this causes infection to the ill patients when they inhale them. Got it? This black fungus disease, this is relatively rare but a fatal one. Got it? This is relatively rare but a fatal one. That means a little delay in the treatment may cause death of an individual. This black fungus infection have been reported in many states of India. जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, लाइक बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए, लाइक कर्नाटका में, लाइक उत्तराखंड में, तेलंगाना में, लाइक मध्य प्रदेश में, इवन इन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार में, बहुत सारी जगहों पे इंडिया में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं. वाइल इन सम स्टेट्स some states have made it a notable disease, and if we talk of Rajasthan, that have already declared it as an epidemic. Got it? Now we'll see how does one catch a black fungus. एक इंडिविजुअल में ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन कैसे होती है? We know that this black fungus is caused by exposure to a mucor mold which may be present कहाँ पे? Soil में भी पाया जाएगा, even in manure, या decaying food होता है, decaying fruits होते हैं, decaying vegetables में होता है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है. And one thing I must add here that's very important, that this can be spread even in hospitals and even in homes by air humidifiers or by oxygen tanks. कौन सी oxygen tanks? Which contain the dirty water. Got it? Wow, we'll see how dangerous is it. अगर एक इंडिविजुअल में ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन होती है तो कितनी डेंजरस इन्फेक्शन होती है. Right? We see that the infection needs to be caught as early as possible. जितना जल्दी हो सके इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, कैच करना है, because it's much aggressive and the dead tissue needs to be scrapped away. You know why it is dangerous? Because when somebody gets contracted by the black fungus, जब एक इंसान में ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन होती है, जो ये ब्लैक फंगस के फंगल स्पोर्स जब एयर में प्रेजेंट होते हैं तो ये नाक से चले जाते हैं. बाय ब्रीदिंग इन वो नाक में चले जाएंगे. नाक में चले जाने के बाद दे विल माइग्रेट हेयर इन सम कैविटीज जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, राइट? और जब ये साइनसेस में पहुंच जाएंगे, अल्टीमेटली दे कॉज इन्फेक्शन टू आवर आई बॉल. So why it is dangerous? Because it becomes compulsion for surgeons to remove the infected nose, to remove the infected eyes, or even their jaw to stop it getting to the brain. Got it? Because once it invades the brain, अगर ये एक बार दिमाग में चला गया, ये infection दिमाग में चला गया, then there are least chances of survival of the patient. That's why it is dangerous. ब्रेन में पहुंचने से पहले इस इन्फेक्शन को हमने कंट्रोल करना है, इस इन्फेक्शन को हमने रोकना है. जनरली वी नो दैट जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स. इफ़ यू आर नॉट सीन दोज लेक्चर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स रिगार्डिंग द डिफेंस मैकेनिज्म. जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि हर एक इन्फेक्शन को रिपल करे, राइट? बट जो वो इंडिविजुअल्स जिनमें वीकनेड इम्यून सिस्टम होता है, बहुत कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है, दे आर एट मोर रिस्क टू गेट दिस फंगल इन्फेक्शन. जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन की.
right? That's why I earlier mentioned in the very first section that when I said what is black fungus, in that I mentioned that this black fungus infection is usually contracted by ill patients. दैट मीन्स जिन पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं इस ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की. Got my point? Now we'll see the important section here, that why these coronavirus patients are at more risk. Why coronavirus patients are at more risk. जो coronavirus, the relation between the coronavirus and the black fungus. क्योंकि हमने देखा या डॉक्टर्स ने भी ऑब्जर्व किया कि ये म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं फ्रॉम द कोविड-19 डिजीज़. उन पेशेंट्स में ज़्यादातर ये ब्लैक फंगस पाया गया है, क्योंकि एज ऑलरेडी मैंशनड कि हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें ये क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है दैट वो रिपेल कर सकता है हर एक डिजीज़ को. वो ब्लैक फंगस को भी रिपेल कर सकता है. लेकिन वो इंडिविजुअल जिनमें इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, दे आर एट मोर रिस्क. एंड इफ़ वी टॉक ऑफ द कोरोना वायरस पेशेंट्स, विल सी लिटिल बिट अबाउट कोरोना वायरस पेशेंट्स. जो भी कोरोना वायरस पेशेंट्स के मरीज़ होते हैं, कोविड-19 के मरीज़ होते हैं, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होती हैं. एक और फिनोमेनन उनकी बॉडी में होता है, वी कॉल दैट साइटोकाइन स्टॉर्म. उस साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है, जो उनका इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है. और ज़्यादा एक्टिवेट होने से दैट लीड्स टू द डैमेज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. जब वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, जो बॉडी के रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज पहुंचता है. एंड व्हाट डॉक्टर्स डू टू प्रिवेंट दैट डैमेज? डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द स्टेरॉइड्स टू कंट्रोल दैट डैमेज. एंड व्हाट स्टेरॉइड्स डू? स्टेरॉइड्स उस पेशेंट की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए और उसका साइटोकाइन स्टॉर्म कमज़ोर हो जाए. एंड अल्टीमेटली जो इसके रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज से बच जाए. गॉट माई पॉइंट? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हेयर, जब उन पेशेंट्स को कोरोना वायरस कोविड-19 के पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिया जाता है, उस स्टेरॉइड से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है. एंड नंबर 1, नंबर 2, उनका जो ब्लड शुगर लेवल हो जाए वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड शुगर लेवल. तो दो चीज़ें होती हैं. जो भी कोविड-19 पेशेंट होता है, जब ये रिकवर होता है इस ड्रेडफुल कोरोना वायरस डिजीज़ से रिकवर होता है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1, इसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है. नंबर 2, इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है. एंड दीज टू थिंग्स दे देन बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड एंड द डोर स्टेप फॉर द ब्लैक फंगस टू थ्राइव ऑफ. ये ज़रिया बन जाता है उन कोविड-19 पेशेंट्स में ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन को कैच करने में. एक डोर बन जाता है फॉर दोज कोविड-19 पेशेंट. दैट्स वाई वी से द कोरोना वायरस पेशेंट्स आर at more risk to get contracted by this black fungus because उनका immune system बहुत कमज़ोर होता है by giving the steroids. Now we'll see the 5th section, that signs and symptoms of the black fungus. Got it? This is the 5th section. As we went through the what is black fungus, how does one catch black fungus, how dangerous is it, why coronavirus patients are at more risk. Now we'll move to signs and symptoms of the black fungus. As we saw earlier that this disease have mortality rate of 50%. However, if it is diagnosed in time, it can be treated as well, right? The first symptom of COVID-19 associated mucormycosis. The thing I must emphasize here and is very important, that the symptom of the COVID-19 associated mucormycosis, उन पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस जो कोविड-19 एसोसिएटेड पेशेंट्स होते हैं, राइट, उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होता है, स्टफी नोज़ होती है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है,
and inflammation on cheeks होता है, या sometimes doctors found that some kind of black crystals are found inside the nose, nasal discharge, inflammation on cheeks right here in this very portion, and like this fungal patches are being present inside the mouth. Fungal patches mouth के अंदर present होते हैं, पाए जाते हैं. Swelling in the eyelid, जो eyelid वाला portion है उसमें swelling होती है. That's why I mentioned earlier that doctors they need then to remove that very particular eye or nose to get it उसको बचाने के, दिमाग में पहुंचने से बचाने के लिए. Got it? क्योंकि once it invades the brain, then it becomes impossible for doctors to treat that patient, because then it becomes there are least chances for the survival of that very particular patient. Got my point? So these are the signs and symptoms of the COVID-19 associated mucormycosis. Right? Now we'll move to the last section, that is the treatment. So if black fungus or mucormycosis is suspected early, then we have a drug in hand that is known as amphotericin B. Got my point? The name of the drug is amphotericin B. This amphotericin B, it should be immediately administered to the these जिनमें black fungus का infection हो, it should be immediately administered to prevent the rapid spread and high mortality rate of the disease. This drug is considered as the first line therapy for invasive mucormycosis. Got my point? And this drug has been highly effective drug for over 50 years, as it has a low incidence of drug resistance in the pathogens it treats. Because ये drug जो है amphotericin B, it is in hand, that means it's available in the market, and this is a drug of choice for preventing the invasive mucormycosis. Got my point? So to summarize all these sections, different sections of the black fungus, I must conclude here that we should not go for the ruthless use of the steroids. We should go for the judicial use of the steroids. We should avoid the unprescribed use of steroids and unnecessary use of steroids. Got my point? This is all about black fungus. Now, if you want more such related videos, you can subscribe my channel